Hello guys, welcome back again to Sai National classes. After so many days, actually I am unable to take your class. Some personal issue and some health issue, whatever you think. But finally, today I decided to take your class as usual. Okay, because OSTET exam is knocking our door because coming September exam is held on 1st September, so I decided to take your class as usual. Okay, let's start our class all about pedagogy. Today come to our topics intelligence, the most important chapter of pedagogy. Let's start. Yes, another thing, please like, share and subscribe for my YouTube channel Sai National classes. For new notifications, please click the bell icon, please. This is all about pedagogy mock test. All of you know that total 150 marks, and among 150 you can find 50 marks from pedagogy chapters, and this is for all both science and art students. Okay, let's start our intelligence questions. The chapter is very important, and this chapter I have decided most important questions, and these questions I think it will be shared with you. Okay. Question number 1. Since when psychologists have been trying to understand the concept of intelligence? Option A, since the 6th century. Option B, end of 8th century. Option C, since the end of 9th century. And last one is none of these. The answer is here. Since the 6th century, option number A is the correct answer. Because साइकोलोजिस्ट माने जेतबले इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को जानिले तो सही समय थिला कि 6th century. Okay, let's come to our next questions. Once again, I'm saying that this is all about mock test of pedagogy, and chapter is intelligence. Question 2, intelligence is the essence of dash. Option A, introverted abilities, and option B, critical ability, option C, inherited ability, and option number D is intelligence. Intelligence. Okay, here is a right answer, inherited abilities. Option number C is here correct answer. Okay, question number 3, who said intelligence is the power of discriminations and selections? From the beginning, I have already said that you can find some definitions. किए कौन डेफिनेशन कही तो ये एग्जाम रे भी दुईटा रु तीन टा क्वेश्चन आसी जाए तो ये जिनसटा को आम जाना जे हु सेड इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शंस, स्पीयरमैन, बिनेट, गाल्टन एंड थॉर्नडाइक. हियर इज राइट आंसर, हियर इज राइट आंसर गाल्टन. ऑप्शन नंबर सी, गाल्टन. Okay, come to our next questions. Option number 4, intelligence is the ability and capacity to reason well and to be. Option number A, self certified, B, self critical, C, self ascertain, and D is self creativity. The here is right answer, self critical. Option number B is right answer is here. Okay, come to our next questions. Question number 5, intelligence is the ability to understand problems characterized by dash. इंटेलिजेंस जो एबिलिटी अच्छी तो अंडरस्टैंड प्रॉब्लम आउ कैरेक्टराइज जो तीन चारिटा जिनस रहा एबिलिटी गोटे अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कैरेक्टराइज
आमे केमती माने जानी परिबा ये इंटेलिजेंस डिफिकल्टी ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्सिटी एब्स्ट्रैक्टनेस एंड ऑल ऑफ दिस एटी हमरो राइट आंसर ऑफ ऑल ऑफ दिस कारण डिफिकल्टी भी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी एब्स्ट्रैक्टनेस भी अच्छी ओके कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस Question number 6. The unifactor theory of intelligence was presented by Dash. Spearman, Alfred Binet, Cyrus Stout, and D. Ray Hall. Here is right answer. Alfred Binet. Alfred. Here is right answer. Alfred Binet. Alfred Binet. फर्स्ट ऑप्शन स्पीयरमैन स्पीयरमैन आमर कौन ना टू फैक्टर थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी ओके क्वेश्चन नंबर 7 twice factor theory of intelligence is related dash Question number 7 twice factor theory of intelligence is related dash twice factor not twice factor two factor theory of intelligence जेमती इंटेलिजेंस रे गुड़ाई थ्योरी अच्छी टू फैक्टर मल्टी फैक्टर तापरे आमर अच्छी थ्री डिमेंशनल थ्योरी बहुत गुड़ाई थ्योरी अच्छी सेमती टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड स्पीयरमैन ओके Question number 8. Two-factor theory of intelligence has two factor. One is general factor and other is dash. Here is option number A. Option number A specific factor. Option B high class factor. Statistical factor and standard factor. आमे समस्ते जानिचे जे जनरल फैक्टर आउ स्पेसिफिक फैक्टर ऑप्शन ए ओके कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 9. Multi-factor theory of intelligence was given by dash. Multi-factor theory कहा द्वारा स्टार्ट होता ना थॉर्नडाइक फुल नेम अच्छी E.L. थॉर्नडाइक है multi-factor theory Come to our next questions. The hierarchical theory of intelligence develop. Hierarchical theory intelligence रे बहुत गुड़ाई theory जेमती कहली कि मल्टी फैक्टर ग्रुप फैक्टर थर्मस्टन कर ग्रुप फैक्टर मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर कर अच्छी मल्टी फैक्टर जेमती कहली कि E.L. थॉर्नडाइक ट्रायरार्चिकल थियोरी इंटेलिजेंस टर्नबर्ग बहुत गुड़ाई थियोरी यूनिफैक्टर थियोरी आमर आल्फ्रेड विनेट टू फैक्टर थियोरी है ना बहुत गुड़ाई थियोरी सेमती हियरार्चिकल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस सेटा आमर डेभलप बाय ऑप्शन ए बॉट ऑप्शन बी वर्नन ऑप्शन सी लिंडसे एंड बोथ ए एंड बी एटा आमर ऑप्शन नंबर बी वर्नन कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस question number 11 three-dimensional theory of intelligence was developed by dash थ्री डिमेंशनल थ्योरी आमर क्या द्वारा डेभलप होती थ्री डिमेंशनल थ्योरी फास्ट हम जाने कौन ना ये आमर राइट आंसर हम आमर ये राइट आंसर हम कौन ना गिलफोर्ड ऑप्शन नंबर बी थ्री डिमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आ गोटे जिनस जाना दे गिलफोर्ड किए ना फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक अप्रोच साइकोमेट्रिक SYCHOMATRIC साइकोमेट्रिक अप्रोच है
साइकोमेट्रिक अप्रोच रो फाउंडर थे थ्री मॉडल्स जहाँ को आम कहती कि थ्री डिमेंशनल इंटेलिजेंस मॉडल गोटे बॉक्स थी देखिए जो मैंने पढ़ी गिलफोर्ड थ्योरी मेंटल कंटेंट मेंटल ऑपरेशंस एंड मेंटल प्रोडक्ट्स माने ईच एंड एवरी पार्ट्स रे आमर सब अच्छी जमती कि फास्ट आमर कंटेंट रे 5 टाइप रो थिला ताको हम शॉर्ट रे कहि ताऊ COP सेटा डिस्क्राइब हेले गोटे लॉन्ग क्वेश्चंस आसे गिलफोर्ड थ्योरी जेहेतु एग्जाम पाख मु शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करुची तो परे मु सब डिटेल्स थ्योरी नोट्स करिछि से नोट्स रे आपण मन भल से डिस्क्राइब कर दे फास्ट एमती कंटेंट रे हमर फिगरल हो सिंबॉलिक हो सिमेंटिक हो बिहेवियर बहुत जिनस अच्छी सेमती कंटेंट रे तापरे ऑपरेशन रे आसबो इवैल्यूएशन हो डिवर्जेंट थिंकिंग मेमोरी बहुत जिनस रहइबा आउ हमर रहिला प्रोडक्शंस रे से आम सिस्टम यूनिट रिलेशंस सब अच्छी एग्जाम रे आसी जिवो ऑपरेशन कंटेंट आ प्रोडक्ट रु कोटा सर्ट रे कहते COP है जोटा मन रखिए लॉन्ग टाइप डिस्कसन है से सब आलोचना हो ठीक अच्छे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इंटेलिजेंस क्लासिफाइड इनटू 3 dimensions just like operation content and dash जमती कि कहली operation content and product here is right answer is option number A product the most important questions of this chapter is fluid and crystallized theory related to dash option A Have and Cattles Watt and Fornon Guilford and Eysenck none of these here is the right answer here is right answer Have and Cattle option number A question number 14 fluid general ability thoughts appears in the form of central nervous system as a dash option A probable potentiality is genetic potentiality both A and B none of these and right answer is here genetic potentiality option number B come to our next questions question number 15 William Wundt the first experimental psychologist was formed as option A America B Germany C USSR and D is Italy here is the right answer option number B Germany question number 16 the first intelligence test was developed on the year of dash option A 1905 1912 1901 1911 here is the right answer option number A 1905 question number 18 the first intelligence test was 1905 was made by dash William Wundt B option hoche Seguin Alfred Binet and Simon and Vernon here is right answer option number C Alfred Binet and Simon okay question 18 Binet Simon scale is administered classified into dash option A 30 items 50 items 20 items and 25 items option is here right answer 30 items okay question number 19 mentally retarded children are classified into dash 4 groups 3 groups 5 groups and 6 group here is the right answer option number B 3 groups okay another question is here three-dimensional theory of intelligence was given by dash option A Galton option B Guilford option C Have and option D Vernon
Here is the right answer. Option number B, Guilford. Three-dimensional theory. ଯେମିତି କି three models of three dimensions. Another name is three models of intelligence model आकु भी कहते जेमती कि एटा स्पीयरमैन कर अपोजिट थिला है बट हिज लाइक टू थॉमस्टन का थ्योरी सी थॉमस्टन का थ्योरी को लाइक करते आदर जमती कि तीनटा मॉडल्स अच्छी मेंटल कंटेंट ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट जमती कही जे कि साइकोमेट्रिक अप्रोच रो फाउंडर थे गिलफोर्ड. Question number 21. Intelligence classified into three dimensional example operation content and product. Our right answer amara product. Okay. This is all about most important questions of intelligence. Thank you. Thank you for watching. If you like these questions, please like, share and subscribe and click the bell icons so that you can find the new notifications. Till then, bye. Thank you.